Hi, hello, howdy. Welcome to this horrible, happy and hilarious quiz. But overall harmless quiz. Every answer today will start with the letter H. Let's see if Nipun and Masira, if Hipun and Hasira can crack them all. Round 1, 10 questions, rapid fire. Earn points so that you can bet those in round 2 and double them. तारक कहता है भाई ह्यूस्टन जी। Hold to protect you from प्रॉब्लम तो है सबके पास, जो नजर ही की है बात। 160. History of us. अल्लाह बुल्ला, अल्लाह बुल्ला। Question number 1. What is the chemical formula of water? None. हाँ दिखाओ. H2O. It is H2O. Woo. Easy one. Okay, ठीक है. Next, question 2. Over 100 years ago, before Wright brothers, the first manned flight happened in what kind of aircraft? Okay, दिखाओ. Helicopter. Hot air balloon. Of course. It was not making sense. Yes. What? Hot air balloon was the first lighter than air aircraft. The first manned flight in heavier than air aircraft was the Wright flyer of Wright brothers. Oh. इसलिए वो important है कि वो the aircraft itself was heavier than air. यहाँ पे because of hot air, the overall aircraft becomes lighter than air. तो वो तो easy part है. हाँ. wow. तो पहले उन्होंने रस्सी बांध के उड़े ताकि हम कहीं निकल ना जाए. फिर सेकंड टाइम दैट वाज सक्सेसफुल. तो नवंबर में वो बिना रस्सी बांध के उड़े. सेम पेरिस में. क्वेश्चन नंबर 3. What is this suit called to protect you from hazardous material? 1, 2, 3. Okay. Nipun. Okay. दिखाओ. Written as Hazmat. Hazmat? Hazmat. I'm Hazmat. not sure about the spelling there. It's Hazmat. It is hazmat. Hazardous material. Yes. Yes. You'll not get it. Hazmat. Hazmat क्या होता है? Hazmat. Question number 4. Founded by Sabir Bhatia, what was the first free web-based email service? Okay, दिखाओ. Hotmail. Hotmail, yes, full of hotness, all the mails. ये उनका लोगो था. एक्चुअली में लोगो में ना ऐसे लिखा था उन्होंने ताकि HTML बड़ा बड़ा रहे, बाकी छोटा रहे, which was to say कि this is web based. HTML is the markup language for web. So cool. Question number 5. What hand gesture is done after saying up top? High five. Up top. तो क्या होता है? Hands up. High five. Question number 5. High five. Hey. डराता है. एक सवाल आपके लिए दोस्तों. What is the capital of Finland? H. Oh no. अरे भाई. बोल. Question number 6. Which shape is the most efficient for tessellating, which is fitting together without gaps, like tile कर सकते हैं उसको, providing maximum storage space with geometrical shape? Hexagon. Hexagon. Wow. Hexagon. कर ना कुछ गलत कर. क्या कर रही है? bees इसीलिए hexagon बनाती है. Like they need to use the minimum amount of wax for the pyramid to have the maximum amount of storage space. So cool. But how do bees know कि hexagon ही बनाना है? उनको थोड़ी मैथ आती है. हाँ. Intuition, bro. नहीं, they don't actually. Nature. They make circular. But a circle has a property, जैसे पाइप से एक सर्कल को इक्वल रेडियस के सर्कल से ना यू कैन ओनली सराउंड बाय 6 अदर सर्कल्स, है ना. जैसे एक सर्कल है बीच वाला, यू कैन ओनली सराउंड बाय 6 अदर सर्कल्स. तो जो बाकी के 6 सर्कल्स ऐसे चिपके हुए ऐसे खींच रहे सब एक दूसरे को अपनी तरफ, तो बेसिकली 6 साइड्स बन जाती हैं उसकी. तो बीज एक्चुअली मेक सर्कल्स. क्वेश्चन नंबर 7. What word means calling for the NASA Mission Control Center because of where they are based out of? क्या बोलते हैं ना? मसीरा, निपुण, ऐसे. Okay, 3, 2, 1. दिखाओ. लेकिन नहीं लिख पाई मैं. हाँ. Houston. Ooh, Houston. Yes. ये नहीं पता. Houston. We have a problem. Houston. Yes. Wow. It is Houston. भाई मेरे को बहुत टाइम तक लाइफ में लगता था कोई इंसान कोई बहुत ग्रेट बंदे ह्यूस्टन जी. उनके पास सब प्रॉब्लम्स का सलूशन है. गॉड. तारक कहता है भाई ह्यूस्टन जी. Houston मेहता. तारक कहता है. Houston. We have a problem. हाँ तो Houston जी आ रहे हैं. कर रहे हैं. प्रॉब्लम तो है सबके पास, जो नजर ही की है बात. किसी relevant perspective में को. Very How nice. stupid can you be? I know. Last time I was high, now this time. हाँ. Yeah, Houston.
Question number 8. Identify this logo. Hot Wheels. Yes, Hot Wheels. उस कार की स्पीड से भागी मैं। और इनके लोगो में एक और वो ईस्टर एग भी है जो हॉट का ओ है, इट लुक्स लाइक टायर। उसका अगर ओ का दिस एंटायर थिंग और टी को जब पूरा मिलाते हो तो दिस इज अ टायर। H और W के बीच में. हाँ, एच और डब्ल्यू के बीच में ये टायर के वो पार्ट्स वो है शेडो। क्वेश्चन नंबर 9. Icy body with a tail was last seen in the Earth's skies in 1986 and will next be seen in 2061. What? मेरे को याद नहीं आ रहा था, छोड़ो. तू जानती है, पता है पर तू जानती है डैश बीबर को। अच्छा हाँ, हेलीज कॉमेट ना. याद नहीं आ रहा था हेली. Yes, Halley's Comet. गलत मुझे देखो एल तक याद आया कुछ. हाँ, कुछ हेल जैसा, कुछ है हेल जैसा। हेजी था. A story that is so intertwined. So American satirist and writer Mark Twain has a connection with Halley's Comet. पता है? So he was born on 30th November 1835, exactly 2 weeks after the comet's perihelion. Perihelion होता है जैसे सन है, तो अगर कॉमेट ऐसे आ रहा है तो इस पॉइंट पे जहाँ पे वापस मुड़ा है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद भाई से पैदा हुए। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन 1909 ऐसा लिखा, आई केम इन विद हेलीज कॉमेट इन 1935. 1835. It is coming again next year and I expect to go out with it. It will be the greatest disappointment of my life if I don't go out with the Halley's Comet. The Almighty has said, no doubt. Now here are these two unaccountable freaks. They came in together, they must go out together. Twain died on 21st April 1910, the day following the comet's subsequent perihelion. तो जब next time वो perihelion पे गए तो मार्क ट्वेन भैया निकल गए. So surreal. उन्होंने लिखा भी हुआ है this. What the what? What the what? तो लोग ऐसे बोलते हैं मेरी मार्क ट्वेन was just an alien. पहले उनको छोड़ गए फिर बाद में लेके चले गए उनको. Wow. that's a nice theory. I like it. But anyway, alien का left his mark, no? Hey. Okay, 10th question. Oh, Last question of Alpha round. This animal, known as Africa's laughing hunter, is often mistaken for a dog, but is actually more closely related to cats. What is it? I don't know, bro. Hyena. पढ़ने में दिया उससे पहले. हाँ, तुम लोगों ने सिर्फ पहला लाइन पढ़ा. मुझे नहीं पता. तुम लोगों ने बाद का लाइन नहीं पढ़ा. Oh no. Is often mistaken for a dog, but is actually more closely related to cats. मैंने पढ़ा तो पर मुझे लगा hyena ही होगा, आया नहीं अभी तक. It's a laughing cat. I know. Hyena is the only animal to laugh. Only animal to laugh. It is. What about yes. you, Masira? I come after. Hyena is not a chidiya. It is a cat. Yes. जो भी है. Okay. सही हो गया इस बार. जो भी है. Shout out to the OG moment जब निप्पो ने गलती की थी, इसको लगा था हाइना चिड़िया होती है, but hyena is actually closely related to cats. hyena चिड़िया नहीं होती. hyena चिड़िया नहीं होती. I am in this video. I want to just clarify. So number 1, hyena sounds similar to मैना. Number 2, that question was कि scavenging कोई animal होता है. Scavenging animal मैंने बचपन में 2 ही पढ़े, eagle और vulture. तो मुझे लगा तीसरा वाला भी कोई बॉडी होती होगी. And it sounds very similar to मैना. So that is why I thought hyena is a चिड़िया. And then I've never seen a hyena. So. अरे 1 मिनट ओए, क्या हो रहा है यहाँ पर? And I know there are some of you. आपने कमेंट करा था. कौन है ये लोग? अमृता पालो from Rainiest. I know आपको भी लगता था hyena चिड़िया. There are some more. Thanks. You made me feel less lonelier in life. Okay, एक छोटा shout out to this person. Less understanding Hindi but still watching without skipping. Fun and questions will be ultimate. All the best guys, keep growing. Hey, thank you. Like really love it when you put like little bit more effort to watch it. हम कोशिश करेंगे थोड़ा इंग्लिश में बात करें, ठीक है? But you know my English little weakness. हिंदी कभी. But we make sure questions are always in English. They will always be in English. एक सवाल आपके लिए, आप इतने ये क्रैक करो, इतने मैं इनका टोटल करता हूँ. आइडेंटिफाई दिस कैरेक्टर. तुम्हें पता है? हातिम. Actually, oh, और का वो गार्ड लग रहा है मुझे तो. beat around. Hasira is at 70 points. Nippo at 80 points. Wow. Very close. Nippo, very close. You want points? Time to bet them on your knowledge and double them. You'll see 6 categories to bet your points on. Each category has a question behind it whose answer will start with the letter H, except one, because one of them is a joker. Behind one of them lies a question whose answer does not start with H.
If you open the joker, you have to call out the joker to win. And if you also give the correct answer to that question, you win double bet points. Your categories are Hardly Back, Humor Factory, History of Us, Hazards Ahead, Headlining Hills. Nippo, you have 80 points. How many points do you want to bet? उसको उल्टा करके इधर लिख दे. समझ आए तो करती हूँ. देखो हा और ह्यूमर तो दोनों कुछ फनी लग रहा है. हार्डली बैक लग रहा है कुछ पुराना है. चलो भाई, हजार्ड्स अहेड में मैं लगा रही हूँ. कुछ ऐसा लग रहा है कुछ साइंस हो जाएगा मे बी. Okay, let's go. In meteorology, it is a powerful, rotating tropical storm with sustained winds over 74 miles per hour. When viewed from above, they are counterclockwise in northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. They specifically form in the South Pacific and Indian Ocean, affecting countries from Australia to Mozambique in Africa, including India. What are these storms called? I don't want to answer in hurry. Okay. पता नहीं, पचका ना हो जाए मेरा. Because I don't. Okay, let's say of course there's hurricane. But then the Joker has not gone. And in all honesty, I don't know the difference between hurricane and tornado and typhoon and all of that. I don't know the difference. Hurricane Katrina आई थी. ये फालतू चीजें पता है मुझे. I don't know. किससे पता लगाऊं मैं कि हरिकेन है कि नहीं? When viewed from above, they are. So it is something like this. So is tornado. And so is typhoon. अब मैं मुझे आंसर तो नहीं समझ आ रहा. मैं क्विज मास्टर पीओवी से सोचूंगी. This is a very good question to make a joker out of. Like you can trick me with typhoon and tornado. Okay. So I will call this out as joker. Okay. And tornado और typhoon में क्या लूँ? साइक्लोन भी है, मसीरा ने बताया. साइक्लोन इंडिया में भी आता है ना. इंडिया में देखो हमने टाइफून तो नहीं सुना है. टाइफून लुक्स लाइक वेरी नॉट इंडिया. साइक्लोन ज्यादा अच्छा लग रहा है मसीरा. I will call this out as a joker. 1 second, let me use the prop joker, and I think this is cyclone. What do you think, Masira? हाँ, I think सही है direction. The answer is, it is a joker. The right answer is cyclone. Oh my, निप्पू, कितना बेट किया तूने? यार बट मसीरा मैं साइक्लोन ही हुआ तो मैं साइक्लोन में जा ही नहीं रही थी. I bet 40 points. You get 80 points. 160. ठीक है. अब निप्पू ने 2-3 चीजें बोली, है ना? Hurricane, cyclone. What is the difference between cyclone and hurricane? Yeah, yes. Nothing. Cyclone that occurs in South Pacific, ये circle South Pacific and Indian Ocean are called cyclones. तो जो इंडिया में आता है, cyclone आता है. Wow. Cyclones that occur in North Atlantic and Northeast Pacific Ocean are called hurricanes, based on the American deity of wind, huracan. Wow. Now, cyclones that occur in the Northwest Pacific Ocean, इनको क्या बोलते हैं हम? Tornado या typhoon? टोर्नेडो पानी में नहीं आता. टोर्नेडो हवा में होता है, मतलब जमीन पे, लैंड पे आता है. कुछ और बचा है क्या? टाइफून. Typhoons, based on the Hindustani Urdu word for storm. Tufan. What the what? इसलिए इसको टाइफून बोलते हैं. ये पढ़ के कल मैं ऐसे से कर रहा था. ओ हो. टाइफून तूफान obviously. Yeah, makes sense. तूफान था निप्पू भाई साहब. कुछ तो क्रेजी क्रैक कर दिया तूने. नंबर 1 पे जोकर, इसीलिए लिखा था हजार्ड्स अहेड. हम इसको अलग अलग नाम देते क्यों हैं? बेसिकली पीपल हु आर ट्रैकिंग ऑल ऑफ दिस मेटीरियलिस्ट, इट्स इजी फॉर देम. मैं हरिकेन बोलूंगा, दे नो कि वहां पे ध्यान देना है मुझे. मैं साइक्लोन बोलूंगा तो इधर ध्यान देना है. I think this is the first time I spotted a joker. I think. क्या करूँ मैं guys? मस्तो जी, you have 7 points. Thanks 7? यार. You have 70 points. 70 points. चलो कर दिया है? bet कर लिया. Oh, मैं ले लेती हूँ history of us. history of us. तूफानी करते हैं. X is a Latin phrase meaning wise human or intelligent man, coined by Carl Linnaeus in 18th century in his work Systema Nature जो भी है. In it, he outlined his ideas for the hierarchical classification of the natural world. For instance, humans were for the first time placed together with other primates.
The full title of the 10th edition, 1758, which was the most important one for some reason, was a general system of nature through the three grand kingdoms of animals, vegetables, and minerals, systematically divided into their several classes, orders, genera, species, and varieties, with their habitations, manners, economy, structure, and peculiarities. What is that X phrase? It's a phrase. It's a two-word phrase. Intelligent man. Wise human. Humankind. Humankind. Homo erectus. Homo sapiens. Latin phrase. I don't know. लैटिन नहीं आती, हाँ, जर्मन आती है. German आती है. German is not coming from Latin. Homo sapiens. It sounds like Homo sapiens to me. Homo sapiens through the three grand kingdoms of animals, vegetables, and minerals. Flora, fauna. Systematically divided into their several classes ordered. अरे छोड़ो यार, इसके अलावा कुछ पता भी नहीं है. Homo sapiens. What do you think? She's right. It is Homo sapiens. Hey! It is us. Super. निप्पू सबसे लेफ्ट में तू भी है. अब सबसे राइट में भी तू है. देखियो आईफोन में यूज कर रहा है. Oh ho ho. Can't admit, can't deny. Yes, Masira, how many points? 30. बस. हाँ, अच्छा लगा ना? हाँ. So you're at 100 points. Okay. You're at 100 points. Nice. Nippo, you have 4 categories left. Hardly back, humor factory, headlining hills. Done. Yeah. Yeah. Okay. You know why? Bye. धड़कन के जोशीले रॉकेट उड़ा के आज कुछ तूफानी करते हैं. आज कुछ टाइफूनी करते हैं. He was an Australian actor who, after playing roles in Australian TV and films, moved to the US in 1998 to further develop his film career. The last 2 of his movies were released posthumously after he had died. A few months before his death, he brought to life the unforgettable Blank in the Dark Knight. अरे यार. The performance made history, winning every major Best Supporting Actor award, Oscar, BAFTA, Golden Globe, SAG and Critics' Choice, all awarded to him posthumously. Who was he? I know. I can't recall. I know the name Hector Bector, Hector Beckel. Halla Bulla. Allah Allah. Oh यार, it was something. Who is this person? अरे the one who was Joker in Dark हाँ, Knight. आज के में 2 jokers हैं. Oh. Yeah, he acted brilliantly. He went mad preparing for what is his name? यार Heckel Beckel. नहीं यार, I can't recall. Now I think there's some G also somewhere. Harvey something. I'm just leaving it Harvey. I don't know. इतना कॉमन नेम नहीं है तो मुझे इधर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ भी दे देगा तो मैं दे दूंगा पर तू So it's not Harvey. नहीं. But you only But last. I've already said. हाँ तो लास्ट 10 सेकंड. हाँ मसीरा. Heath Ledger. The Joker caught up. निप्पू. कुछ ना कुछ तो करके जोकर इधर से नहीं तो इधर से आ ही जाता है. निप्पू दिखा कितने पॉइंट्स लगाए तूने बैठ पे. दिखा शो इट. वाओ. Still you are in a lead. I don't care. वाओ. आंसर तो नहीं बने ना. तो इतना आप केयरफ्री हो गए थे ना कि मैंने जोकर हटा दिया रास्ते में से. I think this is the first time I spotted a Joker. I Yeah. think. ट्विन बहन ने भेजा है. Now Joker is laughing at you. Okay, हाँ, Maso. बढ़िया. Now you have 3 categories left. Hardly back, humor factory, headlining hill. Hardly back. Hardly back. हाँ. कर दिए points back. Okay. Here's a French lesson for you. A small case is called a cassette. ठीक है. है ना इसलिए उसको कैसेट बोलते हैं because it's a small case. Case cassette. Cassette जो टेप रिकॉर्डर हाँ, की कैसेट होती है. हाँ, It's a called small cassette because case. it's small case. Small case can. Oh. A small pipe is called pipette. Okay. जो हम यूज करते थे लैब में. A small cigar is called you get the drill है ना. Okay. Now guess the word that means a small X in French. The word also plays a role in an idiom that means to end in disagreement and become friendly again. कोई idiom है जिसका मतलब ये होता है. The idiom suggests the way to end in disagreement is to put the small X under the ground. Guess the word. To bury the hatchet. Wow. Wow. It is hatchet. Wow. Hey! To bury the hatchet. To bury the hatchet. Wow. That's the meaning of our publisher's name. It means a small X.
in French, which means like cutting through knowledge, like a Wow. small being, like fool, like just लगा हुआ हूँ मैं अपने काम में. छोटू हूँ पर बड़ू हूँ. 40. Ooh. Masso taking the lead now. 140, 110. हो editing a magic. तो निपु तेरे को बताने था कुछ. The MD of Hachette, TA, Thomas Abraham, is also a Brainius member. He has been a pro quizzer. Like he's the perfect person to publish this book. फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने भेज दिया हाँ. रात को, तो अगले दिन सुबह ही उन्होंने पढ़ के ये बोला. He's been into publishing industry. Many years. Many years. मतलब हमारी उम्र नहीं उतनी. हाँ, sorry. He has experience. He's read a lot of books. He's been into quizzing. And उसके बाद उन्होंने बोला कि this is the best book. Don't trust us. Trust TA. TA is right. तो आई थिंक ये वाला वीडियो शायद तब आ रहा है एच से हैप्पी बर्थडे टू मी. मेरा आने वाला है भी 1-2 दिनों में. सो नाउ वी हैव अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम APH टू द क्यूरियस पीपल. वी वांट टू गिव अवे 20 बुक्स टू दोज जो किसी भी रीजन से अफोर्ड नहीं कर पाए थे. देखो, अगर आप उनमें से हो जो खरीद सकता है, नॉट फॉर यू, उनके लिए जो समहाउ स्टूडेंट्स हैं, दे डोंट हैव इनफ मनी कि वो खरीद पाएं, ये 20 बुक्स उनके लिए हैं और प्लीज उन तक पहुंचने देना. सो सिंपल सा करना है आपको जाना है aph.2/birthday. वहां पे पहले 20 लोग क्लेम करके वो बुक फ्री में ले सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज एंटर योर नेम, शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, ताकि वो डिलीवर हम कर पाए वहां तक. इन बुक्स के लिए आपको शिपिंग चार्जेस पे नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू क्लेम देम, द बुक विल बी ऑन योर वे. वी हैव 20 बुक्स. अब एक सीक्रेट है जो इस वीडियो के एंड में मैं दोबारा बताऊंगा. अभी आता हूँ. हमें कोई फोन करके ऐसे बोलता रैंडमली. Oh my God, it's so cute. अभी वो मेरे पास नहीं है, बट आई प्ले उसके अंदर वीडियो में चला दूंगा. वो कहता है कि हेलो, आई लव योर वीडियोस, प्लीज कीप बुक प्राइस लेस देन 500 रुपीज, प्लीज, आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू अफोर्ड इट. I love your videos. Your videos are so good. Please keep the what book price lower than 500. Of course, it is less than 500 rupees. Way less than 500 And rupees. that's not how the voice note ended. It ended with okay. Finish. Done. Finish. Done. So cute. Yay! And Yay. if you can afford, then please go buy it. Go buy it. Please buy it. You will not be disappointed. It will be worth No. all your investment. Yes. Okay, Nipu, you're 110 points. You have 2 categories left. Humor Factory, Headlining Hills. So I will go for Humor Factory. हम किसने कितने बेट्स पॉइंट किए हैं ये देखेंगे दोनों सवाल के बाद. Nipu, here we go. It was an American animation studio and production company that operated from 1957 until its absorption into Warner Brothers Animation in 2001. The studio was founded by William Blank and Joseph Blank, the creators of Tom and Jerry, the Flintstones, the Jetsons, Scooby-Doo, the Smurfs and more. By the 1980s, their dominance faded as Saturday morning cartoons lost ground to weekday programming. लोग weekday में ज़्यादा चीज़ देखने लगे. Saturday morning became like After its 1966 sales to Taft Broadcasting, the studio was bought by Turner in 1991, whose vast back catalog helped launch Cartoon Network in 1992. अगर आपने Cartoon Network देखा है, you have seen most of their work. Identify the studio. हर कार्टून के लास्ट में आता था. I was pretty sure before you opened the answer is Habitat. Habitat? हाँ. Oh! I thought Bombay में Habitat, बलराज भाई का Humor Factory makes so much sense. Then I remembered I have कभी framed a question about Tom and Jerry, and I know Tom and Jerry and Flintstones ये सब एक ही बंदे ने बनाया. I remembered Barbara. But then by the end of it, I could remember Hannah also. So this is I have no idea. It is Hanna-Barbera. Our Tom and Jerry class में था a Hanna-Barbera production. oh. Good one, Nipu. You have bet some points, Yes, है ना? yes. We'll get to know after. Masso, Yes. bet some points and Headlining Hills. Anything else you want to take? Why was I'm quitting. Headlining Hills. The iconic X began in 1923 as a real estate advertisement reading X Land. But it became a symbol of this particular industry after its land portion was removed in 1949. Although it was a temporary wooden structure intended to last about 18 months when first built, now each of the 9 45-foot tall steel chunks is protected by a security system. It was designated a Los Angeles Historic Cultural Monument in 1973. What is it? Los Angeles. What the structure looks like Hollywood. starts with H. Hollywood. What Hollywood?
Hollywood? Hollywood is an- Hollywood, very very jolly. Hollywood land, Hollywood is an industry. Holly. But it became a symbol of this particular industry after its land portion was removed. Hollywood sign जो उनके पहाड़ों पे रखा रहता है ना, LA में ही तो है वो. The Hollywood ही तो था और क्या है उसमें after its land portion. Where is Hollywood sign? सागर ये बोल रही है मैं नीचे गिनी हूँ 9 ये तो लेटर सही तो बोल रही है सर. हाँ, these are the 9 letters. तो शुरू में Hollywood land था पूरा, बाद में उसको हॉलीवुड कर दिया. देयर आर सो मेनी प्रैंक्स जो इसके साथ बनाए गए हैं, लाइक हॉलीवुड बना दिया था, यहाँ पे चद्दर लगा दी थी. तो बहुत कुछ इसकी हिस्ट्री है. तो अभी तो इसको सिक्योरिटी सिस्टम के साथ रखा हुआ है अच्छे से. यू कैन नॉट गो पास्ट. बट मसो ग्रेट ग्रेट क्रैक. कैसे बेचारी ने बोला, तूने कहा क्या हॉलीवुड सही बोल रही थी वो. हाँ, बस मैं देख रहा था अगर वो साइन बोल देता. बोला ना? हाँ, बोला. नहीं. जैसे तूने साइन बोला मैंने आगे कर दिया. हाँ, आई गॉट माय आंसर. देखो, हाउ मेनी यू आर एट 110. एक एक करके कितने दिखाएगा? आले ओह माय गॉड. तो यू आर एट 220. सारे पॉइंट. मसो यू आर 140. 100. यू आर 240. क्या मैथ सीख रहे हो मसो? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. मैंने कहा हार गए तो 40 तो रहने 40 चाहिए तो गामा रहने के लिए. भाई ग्रेट. 240 points मसो. 220 points Niku. But do not celebrate just yet because we have one last game. It's season 2. Handshake. Alpha Beta Gamma. Game is not over yet. छोड़ दे. There's one final round. Gamma. You have to solve a puzzle. Here is your puzzle. ठीक है? It's a little difficult. I have revealed all the H's, but as you can see, there are not too many H's. It's called Hocus Pocus. Everything related to it. Everything related to magic. Nice. Magic. Hocus Pocus. ठीक है? Is in there in this crossword. Okay, so let's play. Hello member. Hello. Hi Auntie. विप्पू तू मुझे रोस्ट करते हैं मेंबर्स ओनली वीडियो में. Give me 7 across. Evil curse or a color. 4 down. Broom rider. What is this, man? What is this? 5 across. Magical brew. I will slap you. 8 across लेते हैं. 8 across तो ना मैं खुद भूल गया हूँ क्या था आंसर. Wow. और करो. ये इजी है. हाँ देखा. -50 निप्पू के. Whose master decision is final? It starts with W. अरे यार. Hangama is inevitable. Now the last round is for brainier and brainiest members only, and we'll see you in the multiverse of members. But है ना, कुछ लोगों को लगे यार नहीं यार गेम पूरा दिखाओ. देखो पूरा गेम हो चुका था बीटा तक. So you know how does an artist feel जब उनको पता है और हमने इतना दिन लगाए, घंटे लगाए to create a video and then only less than 500 people get to watch it. Yeah, it pains. I know. जैसे आपने देख पाते हो, it pains. Like there is a little bit of pain, but memberships, like I don't know how to tell you, but memberships is the only way we make money. And without it, APH would have shut down last year in September. जब हम बैठे हैं, like exactly 12 months ago. So somehow these 500 people came forward, supported with their memberships. तो इनके लिए थोड़ा सा extra content, extra little round. तो अभी भी जितना money we make, everything gets invested into the team, into the projects. So yeah, so if you can support, please do support by being a brainier and brainiest member. ठीक है? हाँ, उसके बदले में you'll get like अभी कितनी 80+ videos हो चुकी हैं, extra videos. You'll get that. ठीक है, बाकी and you'll also be like अंदर से अच्छा लगेगा कि थोड़ा warm fuzzy feeling आएगा कि hey, I'm supporting like this interesting new fresh content on internet. So cute. ठीक है, तो It's true. If you can, please support us. only because of that APH stays alive. But hey, thank you. You made it possible. You Thank lovelies. you so much. Thank It you. means a lot. दोस्तों अब हम लौटते हैं अपने Lot. अब हम लौटते हैं अपने मल्टीवर्स ऑफ मेंबर्स में. We'll see you there. Thank you. अच्छा ठीक है, देखो बहुत सारे लोग तो चले गए होंगे 20 बुक्स लेके. मेरा बर्थडे आज तो है नहीं जिस दिन वीडियो जा रही है. आई विल अनाउंस अ गिव अवे 100 books on my birthday on my Instagram page. If you want to stay updated, come and say hello to me on Instagram. मैं Instagram पे स्टोरी डालूंगा. जब तक वो लिंक अवेलेबल रहेगा, अगर वो 100 बुक्स चली जाती हैं, I'll delete the story. बट अगर आज आपको नहीं मिल पाया है, तो come say hello to me on Instagram. बुक खरीद लेना. याद है ना? याद है ना? याद है ना? हरी. हाँ जी मैडम, बुलाया आपने? अरे यार.
आज खाने में क्या बना है? अरे हरी स्ट्रॉ ओ बस बस दिवाली ऑफर भी ले लेना। बाय दोस्तों।